दोस्तों, जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो कभी भी हमें ऐसा मौका मिलता था जब हमें कुछ चीज़ बोर्ड पे एक्सप्लेन करनी है, तो अगर हम उसे एक्सप्लेन कर देते थे तो हम बहुत खुश होते थे। वी फील प्राउड कि वाह यार, मज़े आ गए, यही तो लाइफ है ना। हम ऐसा प्राउड फील करते थे और बड़ा ही खुश होते थे। और वो मतलब वो टाइम बड़ी जल्दी 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 कैसे पास हो गया कुछ पता ही नहीं चला, है ना। बट जैसे ही हम बड़े हुए, हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें और वो एक साल हो जाता है, उसमें नहीं हो पाता, फिर दूसरा साल हो जाता है, फिर भी नहीं हो पाता, तो हम बहुत ज़्यादा सैड फील करने पड़ते हैं, है ना। डिप्रेशन, एंजाइटी, सो मैनी थिंग्स कम्स इन आवर लाइफ। तो और स्पेशली जब बात हो यूपीएससी की तो इसमें ये चीज़ स्पेशली है। तो इन सब चीज़ों से उभरने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें बस कुछ नहीं करना दोस्तों, छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, छोटे छोटे स्टेप। And believe me, if you will make these small step by consistent way, you will achieve your target. Just like I. Right now I am also in this phase along with you. So if you are also in this condition, you must watch this video till the end, because in today's video I will discuss my today's schedule and how I will achieve that. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली आईएएस में। आज मेरी तैयारी का है डे 69, मतलब 69। और जो मेरा टारगेट है यूपीएससी सीएससी 2024, उसके लिए प्रीलिम्स के लिए एग्ज़ाम के लिए डे रह रहे हैं ओनली 300। 300 काफ़ी एक यूनिक नंबर है। 300 आई थिंक एक मूवी भी आई है 300, काफ़ी फेमस मूवी है। सो विदाउट एनी डिले लेट अस सी व्हाट विल बी माई टुडे शेड्यूल। So as you can see, today is 31st of July, and here this side, left side is time, and this is what I will do my today's schedule. Okay, so from 9 to 10, this 9 to 10 I will do my technique learning, and during whole day I will do GS1 Indian Art and Culture, it's revision 4. Okay, I have divided my day into study blocks of 1 hour, which consist of 45 minutes of study and 15 minutes of break. Okay, and this will be not simple break, it will be efficient break. Okay, so one study block, 2, 3, 4, 5, 6. 6 study block I have of 45 minutes each and 15-minute breaks. I will do only revision of GS1 Indian Art and Culture. This will be my 4th revision of the same thing, and from 5 to 6 is my break, and then from 6 to 7 is buffer time, and then 7 to 8 is co-op and marginal gain, 8 to 9 is dinner. So this is my today's schedule. Let us see how I much achieve in tomorrow daily accountability report. So thank you, please subscribe the video.